भोजपुरी में जवाब आता है, फिर वहाँ यहाँ पे आके वो फिल्टर होता है हिंदी में, फिर यहाँ आते आते ना फिल्टर हो करके अंग्रेजी में निकलता है, तो मेरे लिए भी बहुत टफ है, मैं आपको सच में बताऊँ। कभी कभी लगता है आप उन्हीं भगवान है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता भाई, कहाँ भगवान। रिजेक्शन को अपने पॉकेट में रखना मतलब यह है कि सबसे पहले रिजेक्शन ही मिलेगा। It can't happen that you stand in front of Dershish Mukhija and he'll say, "Oh my God, where were you? I was looking for you." It doesn't happen that. Unless you're a star kid. आप बड़े स्टार के बेटे बेटी नहीं हैं, तो आपकी तकलीफ ज्यादा होने वाली है, ये लिख के ले लीजिए कि तकलीफ होगी। आजकल कौन सी फिल्म आप बच्चों को दिखा पाते हो? या तो बहुत ही मार धाड़ होती है, या तो फिर उसमें जो है सेक्स होता है। मनोज बाजपेयी ने, मनोज भाई, सॉरी, फैमिली मैन 3 कब का आ रहा है? It's coming, and the 3rd edition is far more bigger, far more better, far more exciting. Hello and welcome. My name is Sanya and I have the privilege. ऐसा लगता है मैंने बहुत अच्छे काम करे होंगे that I get to sit with you, sir, and with you, sir. Welcome to Z Switch. Thank you. Thank you. First of all, I want to know lots of people standing in for selfies with you. अच्छा लगता है ये वाला चीज, or do you get irritated now? No, I don't get irritated at all. But to tell me who in this world will get irritated of love? Nobody. I mean, this sheer love and passion for good cinema that these people have. So मुझे अच्छा लगता है। Tell me, you have got a national award, several national awards, a lot of awards. Is the answer to Mumbai ka King Kong changed for you? Answer? Then what is the answer? It's you, of course. Bhikkhu Mhatre was always the Mumbai ka King Kong, and he still is Mumbai ka king, right? Right. Bhikkhu Mhatre. So Joram is coming. Tell us something about that, sir. Yes. It's a film that took many years for us to make. The first time we read it was 2016, and it's the 3rd film that we've done together. Yeah. Right. So it's been a journey for the both of us, and it's a film that's socio-political at its heart, but we've tried really hard to make a very engaging survival thriller, an adrenaline pumping run through the interiors of India. So it's all of those things. It's hopefully a very accessible and engaging film for a very wide audience. अगर कोई ऐसा इमोशन है या is there a message that you would want the audience to take away from you, वो क्या होगा? A film like this, of course, it comes from a place of wanting to raise a lot of important questions about where we are as a country, where we are as a people, and where we are as a race, because it's questioning our unsustainable ways of living our lives, what we understand as development, and a blind bloodlust for development. So somewhere it raises those questions, but all of this is in the backdrop. Somewhere at the front and center is that emotional journey of a father and a daughter. So it's all of these things, and we're hoping that people take away that emotion and those questions that then they can ponder about on their own. आपका कोई takeaway था सर? Takeaway is the experience of portraying this character. Takeaway always is the passion with which one has worked on a project with the like-minded people, with the same passionate people. You improve as an actor always with a film like Joram, and also when you are interacting and sharing space with so many talented people, they actually force you to improve, explore, and that's my takeaway. Because you guys have done 3 films together, ऐसा कुछ है जो आप लोगों ने एक दूसरे से सीखा? मैं तो सिर्फ सीखता हूँ देवाशीष से। देवाशीष is that kind of a talent who's also a writer. So I learn a lot from his writing, because and he also prepares his actors and his entire unit. He's blushing. Yeah, he blushes. He's always embarrassing. Yeah, so he always prepares them beforehand. He's not somebody who leaves any stone unturned when the preparation is happening. He's actually prepared to shoot. Say after 3 months he's prepared to shoot, but he goes ahead and prepare extra, so that the shoot time is less. So when he is actually shooting it, if you ask me, we are finishing it fast, only because he's prepared not only himself that much, but also his unit, and that includes us also. When we go through the workshops, the dialect coaches, the dress trials, the makeup trials, I mean, he tires you out when he is actually making you prepare for the role.
Yeah. What about, so what have you learned from him? One of the biggest takeaways from my almost 10 years of association now with Manoj sir is that before that, no, what I understood of filmmaking and what people in the industry would like you to think about filmmaking is that everyone's assigned jobs. There is the director, then there is the actor, and everyone comes, does their jobs, and the film sort of makes itself. But here's an actor who, the first time he read the script of Bhosle, the first script I took to him, he said, not only will I act in it, I'm going to help you find funding, because it's very hard to find funding for films like this. I'm going to be a co-producer. I'm going to walk with you from this day on. You're not alone. So I started actually insisting on every other collaborator who comes onto my films in the last 10 years that this film is yours as well. It's not just me who's putting this together. You're not coming to just do a job. It's an army. Now you're part of the army. You're going to fight alongside me. That's one of my biggest takeaways. So in all the younger actors who work with me over the years, I keep telling them that when you're part of a film, you believe in the film, it's your part of your job now to empower the film too, to fight for the film beyond just doing your job, because he goes beyond that. All the 3 films I've made with him, he's brought the funding, he's brought the producers, he's brought Z Studio. These films don't get made if he doesn't fight for them. When you hear that, ऐसा लगता है, कभी-कभी लगता है अपन ही भगवान है. ऐसा बिल्कुल नहीं लगता भाई, कहाँ मरवा रहे हैं। इससे अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, करियर चल रहा है, मतलब इतना एरोगेंस का ए भी नहीं है मेरे अंदर में। हाँ, आर्टिस्ट का ए है, आर्टिस्ट का ए है मेरे अंदर में, एंड मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूँ, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे you will only be known for your choices and for your filmography, and thus that is what I was interested in always, and this is what I'm doing when I'm choosing my roles very carefully, because I want my filmography to really shine, you know, once I exit from here. So I'm more interested in that one than anything else. When we shoot, we also connect, we also share, sometime over food, cooking, just discussion, laughter. So all of these things, for me, it's very important that I know each and everyone who I'm working with. And for that, we really need to, you know, we need to share that space, you know, equally. And know each other very well when we are shooting. It shouldn't be like shot आया है, shot दिया, फिर चले गए. With me, it's contrary. I can't work in an environment if I just have to give a shot and go back to my van. I just can't work like that. Tough होता है फिर उस रोल से बाहर निकलना, because you're so invested in that. It is. See, it's tough for any actor who is getting into the skin of the character. You know, that deep. It is tough. Sometimes when there is no work right after that, it takes time to come out. But if there is work, then the stress or the pressure of the next work, you know, takes over and makes you actually forget. You just, you know, shove it under the carpet. What will be the consequence of it mentally in the end? I don't know. You know, it may take its toll one day. But till now, I'm sane. I'm wise. and thankful to God all the time. Yeah, I'm going to request you थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे. हाँ, तुम ही अंग्रेजी में बात कर. Sorry. अब मैंने सोचा आप संभाल लोगे. मैं भोजपुरी बात करूँगा. तुम बंगाली में करोगी, ये बंगाली में करोगी. नहीं, ये सोच रहे थे कि आप संभाल लोगे. आप संभाल लोगे ना. मैं तो कुछ भी संभाल सकता हूँ. ठीक है, हिंदी में करते हैं अब. हाँ. Even if I say the question in English. हाँ. नहीं, आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा. ठीक है, done. I will. मेरा क्या है ना कि मेरी मातृभाषा जो है भोजपुरी है. तो पहले मैं जब जवाब देने से पहले भोजपुरी में जवाब आता है, फिर यहाँ पे आके वो फिल्टर होता है हिंदी में, फिर यहाँ आते ना फिल्टर हो करके अंग्रेजी में निकलता है. तो मेरे लिए भी बहुत टफ है, मैं आपको सच में बताऊं. ओके, ठीक है. आपने बात करी चॉइसेस के बारे में, फिल्मोग्राफी के बारे में. क्या सीक्रेट है आपका जिससे आप चूज करते हो मूवीज? व्हाट विल कन्विंस यू कि हाँ मुझे ये पिक्चर कर लेनी चाहिए? व्हाट इज दैट वन थिंग? नई चीज़, मतलब जो मैंने कभी किया नहीं है, या स्क्रिप्ट तो पहले बहुत ही इंगेजिंग होनी चाहिए, और चैलेंजिंग इसलिए कि वो मुझे चैलेंज करे, वो मुझे लगे ऐसा कि यार ये बहुत डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट है लेकिन बहुत इंगेजिंग भी है, मैं इसका पार्ट नहीं हुआ तो मुझसे कुछ बहुत गलत हो जाएगा, ऐसा लगना चाहिए. जब वो लगता है तो आदमी जो है इमीडिएटली जाकर फिल्म करता है.
और अगर कोई एडवाइस हो जो आपको यंग एक्टर्स को देनी हो चूज करते समय फिल्म, तो आप वो क्या दोगे? वैसे लोग आते हैं आपके पास एडवाइस लेने? यही काम नहीं करता हूँ क्योंकि ज्ञान देने वाला सबसे पहले जो मरता है। बिल्कुल। तो सबकी जर्नी बिल्कुल अलग होती है, सबकी जर्नी बिल्कुल अलग है। सब अलग अलग अपब्रिंगिंग से आते हैं, एरिया से आते हैं, कल्चर से आते हैं। उनसे सिर्फ हमेशा एक ही बात कहता हूँ, रिजेक्शन को अपने पॉकेट में रखना। मतलब यह है कि सबसे पहले रिजेक्शन ही मिलेगा। It can't happen that you stand in front of Dershish Makhija and he'll say, "Oh my God, where were you? I was looking for you." It doesn't happen that way. Unless you're a star kid, then it happens. Unless you're a star kid, So then that you are not. Why are you throwing me under the bus, sir? No, I mean the thing is कि that you are not. आप है ना, है नहीं। आप बड़े स्टार के बेटे बेटी नहीं हैं, तो आपकी तकलीफ ज़्यादा होने वाली है। ये लिख के ले लीजिए कि तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ से उबरने का बस एक ही रास्ता है कि आप कितनी मेहनत करके स्किल सीखते हैं, कितनी मेहनत करके क्राफ्ट सीखते हैं। दैट बिकम्स योर फादर एंड मदर। उसका फिर तोड़ नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, उस दिन आप छक्का मारोगे। सो आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है, चाहे वो छोटा रोल ही क्यों नहीं हो। यू विल ऑलवेज गेट रजिस्टर बिकॉज यू हैव, आपका जो क्राफ्ट है वो आपके साथ है। वही आपका माँ, आपकी माँ है, वही आपका बाप है। और उससे बड़ा कोई आपको उससे बड़ा कोई मेंटर नहीं हो सकता है। Yeah. If I may add to that, I mean, what he has again taught me and shown me is to not wait for opportunity to come knocking, but to keep trying to create your opportunities. Yeah. These 3 films are opportunities he has created. He doesn't wait for the good films to come to him. He's constantly seeking us out. Yeah. Yeah. Joram is going to be your first theatrical release. So how does that feel? I'm very anxious. I've never experienced this run up to a theatrical release, to see my film inside halls in my country. It's never happened before. So. Yeah. And there are no cuts in the film, and that's very rare. And a UA certificate. मतलब अपने बच्चों को लेके जाइए। आजकल कौन सी फिल्म आप बच्चों को दिखा पाते हो? या तो बहुत ही मार धाड़ होती है, या तो फिर उसमें जो है सेक्स होता है। तो भाई आप इसे फिल्म UA दिया है सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के। मैं आज अपने भाई को बोल रहा था, भाई स्क्रीनिंग में अपने बच्चों को लेके आओ, 13 एंड अबव किसी को भी लेके आ सकते हो। तो उसने कहा कि वो तो बिजी हैं, लेकिन हम लोग जो है आपको अश्योर करते हैं कि हम 13 एंड अबव जरूर हैं। ओके, बस समय की थोड़ी सी कमी है, तो आई एम गोइंग स्ट्रेट जंप टू अ फन सेगमेंट। ठीक है, सो दिस इज थ्रोबैक थर्सडे, इवन दो इट्स अ मंडे, बट वी गोना प्ले इट ऑन थर्सडे, तो हम थ्रोबैक थर्सडे करें। एक तो उसमें जोरम का जरूर है ना? जोरम का हाँ डन, हाँ फर्स्ट ही है। नहीं तो मैं जोरम 20 बार बोलूंगा आपके कैमरे पे। बिल्कुल, आप बोलिए। ठीक है, तो पहला है कि जोरम आपने बोला है मेरे करियर की सबसे यूनिक फिल्म है। बहुत ही यूनिक फिल्म है। बट ऐसा क्यों कहा आपने, मुझे ये बताओ। बहुत अच्छी बात है। एक इस तरीके का सिनेमा है जोरम, इसको मैं जो अपने पूरे फील में इंडिपेंडेंट फिल्म का फील है इसमें, बट अपने पूरे नेचर में ये मिडल ऑफ द रोड सिनेमा है, अपने पूरे नेचर में। और मेन स्ट्रीम जो है ये अपने जॉनर में है। इसके अंदर में पूरे तरीके से थ्रिलर एलिमेंट है, जो आपको आंख नहीं हटाने देता है पर्दे से, जबकि आपके सामने जो भी हो रहा है बहुत ही रियलिस्टिक है। बट चूंकि स्क्रिप्ट में इनहेरेंट थ्रिलर का एलिमेंट है, उसकी वजह से आप लगातार इंगेज रहते हो उस बच्ची के साथ में और उस बाप के जर्नी के साथ में, विच इज सो अमेजिंग, जो मैंने फिल्म देखते हुए ये फील किया था। ओके, मनोज बाजपेयी सोचा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो सारे फॉरेन के रिव्यूज भी वो एक जॉनर में हमको क्लब ही नहीं कर पाए। राइट, उनको समझ कोई कहता है नॉट अ सिंगल बैड रिव्यू। हाँ, नॉट अ सिंगल बैड रिव्यू। आप नजर मत लगाएं। डोंट वांट एनी। ओके, मनोज बाजपेयी ने, सॉरी, मनोज बाजपेयी ने 14 साल से डिनर नहीं किया, इज दैट ट्रू? ऐसा भी नहीं है। कभी कभी जब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सामने बहुत ही मतलब लजीज खाना ला के रख देते हैं, चिकन टिक्का वगैरह ला करके रख देते हैं, या हरा भरा कबाब। तो आपके कैमरामैन ऐसे कर रहे हैं। तो अब जब इनकी ये हालत है, तो सोचिए कि मेरी क्या हालत होती है। तो कभी कभी ऐसे एक टुकड़ा लेकर के ऐसे मुंह में डाल लेता हूँ। लेकिन सही करेंगे आप, एक हैबिट है कि लंच के बाद कोई मील नहीं खाने की, वो कई साल से है, और इसने मुझे बहुत हेल्दी रखा है। और मतलब
सबको अच्छा है भगवान, थैंक यू गॉड। अभी तक फिट हूँ, मतलब आई मेट शारे भाष्मी और उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा मटन बनाते हो, इज दैट ट्रू? हाँ, लेकिन शारी भाष्मी सिर्फ खाता है, कुछ बनाता नहीं है। शारी भाष्मी कुछ भी नहीं बनाता। जोरम के शूट पर भी मटन बनाते थे और सबको खिलाते थे। आई वांट टू नो कि कौन सा ऐसा अच्छा काम करना पड़ेगा टू क्वालिफाई एंड हैव फूड मेड बाय यू? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भगवान से मनाइए कि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद जी के लिए काम करूं, और आप जो हैं, आप भी उस समय इस ऑफिस में रहें। डन।